Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Cantab Publishers video lessons. Before starting the lesson, dear students, you must have with you class 3 English textbook, workbook, resource pack and summer pack. Resource pack is for parents and teachers guidance. You can also download it from Cantab Publishers official website. We are going to start our lesson from unit 5. Keep your heart open, and our topic is simple sentences. SLOs of this lesson are identify and use simple sentences. We are going to start from page number 33 of your textbook. We have a grammar section here, kinds of sentences. इस lesson में हम kinds of sentences discuss करेंगे, declarative और interrogative. Declarative sentence क्या है? A sentence that simply states something. Declarative sentence वो होता है जो किसी चीज़ के बारे में आपको information देता है या कोई भी चीज डिक्लेयर करता है, जैसे कि शाजिया वर्क्स इन अ बैंक. अनदर एग्जाम्पल, ही इज माई एल्डर ब्रदर. ये क्या है? डिक्लेयर किया है, इंफॉर्मेशन दी है आपको डिक्लेरेटिव वे में. इंट्रोगेटिव वे आपका क्या होगा? सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन. ये बहुत सिंपल है, आपको आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल कोई डिफिकल्टी नहीं होगी. इंटरोगेटिव में आपका जो सेंटेंस होगा वो शुरू होगा वेयर, व्हाई, हु, व्हिच, डू, डिड, हाउ. इस तरह के वर्ड से आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है और आखिर में इसके क्या आता है? क्वेश्चन मार्क. जितने भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है उसके आखिर में क्वेश्चन मार्क आता है. ये आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत आसानी होगी. तो एक्सरसाइज की तरफ आ जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट व्हाट काइंड ऑफ अ सेंटेंस ईच ऑफ द फॉलोइंग इज. सारा केम टू माई पार्टी. कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, डिक्लेरेटिव है, डिक्लेयर किया जा रहा है, कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है. सारा केम टू माई पार्टी, सारा मेरी पार्टी में आई. तो ये क्या हो गया? आपका डिक्लेरेटिव हो गया. बी, हु कैन आंसर द क्वेश्चन. मैंने आपको बताया था कि इस तरह के वर्ड से आपका सेंटेंस शुरू हो सकता है इंटरोगेटिव और आखिर में आपका क्वेश्चन मार्क भी है. सो दिस वन इज इंटरोगेटिव. किसी चीज के बारे में इंटरोगेट किया जा रहा है. सी, गॉड गिव्स अस रिवॉर्ड. ये क्या है? अगेन डिक्लेरेटिव है. द बॉयज लॉस्ट द कॉन्टेस्ट. Again declarative. The Can Shafe finish this work in an hour. अब ये क्या है? क्वेश्चन फॉर्म में है आपका, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया आपका. The F Ramin could not reach the station in time. Again they're declarative. The last one, they are studying in the library for their exam. Again, this is in declarative form. Question number 2, insert the missing letters and learn the spellings. ये कुछ words हैं जिनके कुछ letters missing है, आपने इसको complete करना है. ये वाला word है आपका yes, HETHY. इसमें 2 letters missing हैं. ये आपका क्या होगा? Yes, healthy. A और L मिसिंग था इसमें. The second one is what? HEPIG. This one is very easy. Helping. The third one is DITNCE. Again, the 2 letters are missing. Distance. The A and the S was missing. And this one, JONEY. 2 letters are missing. Yes, it's journey, suffer. And this one is N or G. 2 letters are missing. Need. And this one is here, found. Found तो एक word है, लेकिन इसके साथ 2 और letter हम लगा देंगे तो ये कुछ और बन जाएगा, कोई नया word बन जाएगा. Yes, ER. Founder, बनाने वाला. And this one is here, ALYS. The 2 letters are missing. Yes, W and A, always. Okay, in this word we have
3 letters missing. What it could be? This is a long word. Yes. Occupation. Double C and T was missing. The last one here. What it could be? Yes. We have 3 letters missing here. Precious. E-O-U was missing. And this one here is a long word. Tradition here. And this one is here, the easy one. P-L-N-C. S here. Please. And the last one is a tricky one. We have 2 letters missing. H-E-I-T-A-I-O-N. Yes, hesitation. This is your class talk from workbook, page number 24. Use these words in simple sentences. You can take help from your siblings. सिंपल सेंटेंस में यूज करना है. सिंपल सेंटेंस आपका जो है बिल्कुल सिंपल वर्ड्स पे कंसिस्ट होना चाहिए. छोटा सा जुमला हो, जैसे कि माउंटेन्स है, आपने माउंटेन्स पे एक सिंपल सेंटेंस बनाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक ग्रीन माउंटेन्स. ओल्ड, माई grandmother is old, and the time she values time. The give, I give chocolate to my friends. The first one, beggar. He saw a beggar on the road. This is your homework from Summer Pack. Keep your heart open. Unit 5. And question number 1 here. Choose a correct option and write few lines about the option. For each sentence, you have to choose the right option here. हर सेंटेंस के लिए आपने राइट ऑप्शन चूज करना है. 3 ऑप्शंस दिए गए हैं ऑन पेज नंबर 37-2. और पेज नंबर 38 पे आपके समर पैक से होमवर्क में एक एक्टिविटी भी है. मेक अ क्वेश्चन इन एंड आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एनी वन ऑफ योर फैमिली. राइट क्वेश्चन ऑन लेफ्ट साइड एंड आंसर ऑन द राइट साइड. अपनी फैमिली से आपने एक सवाल पूछने हैं, क्वेश्चन ईयर बना ले. कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछें. यहाँ पर आपने क्वेश्चंस लिखने हैं और यहाँ पर उनके सामने उनके आंसर्स लिखने हैं. 5 क्वेश्चंस आंसर होंगे. I hope you have enjoyed my lesson. Thank you.